देखो मैं I don't really go to weddings. I know you. I don't know if you know or not. You don't really go to weddings? Really go to weddings? This was not just a wedding. सारे काम करा This ये रिकॉर्ड कर इसको. मुझसे सारे काम ये काम कर, इसमें से क्लिप निकालेंगे. सुनो शादी के सारे और उमर साहब क्या हाल है? बस यार ठीक है. क्या कर रहे हो आजकल? बस काम चल रहा है. कहाँ? आजकल मैं एक फिनटेक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो अच्छा जा रहा है. सो फार मज़ा आ रहा है. अब ये बिल्डिंग समथिंग जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो इट्स ऑलवेज लाइक पाकिस्तान में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. हाँ आई मीन लाइक एग्जिस्ट करता है एक तरीके से, बट नॉट इन इट्स ट्रू सेंस. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम जहाँ पे आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो दैट इज़ गोना हैव लाइक अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट, और दैट्स गोना लाइक फाइनेंशियल वेलनेस हमारा विजन है, तो उसको हम लेके चल रहे हैं, विच इज़ गोना रियली बी यूजफुल फॉर पाकिस्तानी. तो अच्छा जा रहा है सो फार. आई रिमेंबर दो मैं जब हम लोग यहाँ बैठते थे, याद है MDi के जो एक गार्डन होता था पीछे. हाँ वो बैकयार्ड, दैट वाज माय फेवरेट प्लेस. वहाँ बैठते थे हम लोग, 6 सूटे मारते थे, चाय पीते थे. यार 10 years, can you imagine 10 years? It seems like कि अभी बस कुछ महीने पहले मैं आया था एक छोटी सी सिटी से उठ के और इस्लामाबाद में मूव किया, और it was like it seems like कि इतना टाइम नहीं गुजरा, बट 10 साल जब मैं सोचता हूँ कि अब बैठ के सोचना होता है कि यार 10 साल गुजर गए उस चीज़ को क्यों. तुम छोटी सिटी से एक्सपोजर बिल्कुल मिनिमल, और लिटरली यार और मैं यहाँ बर्गर बॉय इस्लामाबाद का शायर सा बच्चा. लिटरली के एक पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अर्से तक पढ़ के एक छोटी सी सिटी में से आया कि जहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं था, और फिर इस्लामाबाद जैसी सिटी में आना, और फिर यहाँ पे एक कंप्लीट डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम और एक्सपोजर में आके पढ़ना, नए लोगों के साथ पढ़ना. इट वाज अ डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन, बट आई थिंक विद द टीम जो वहाँ पे MDi में थी, आई थिंक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया एक तरीके से कि इट फेल्ट लाइक इवेंचुअली लाइक इन जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक मंथ्स इट फेल्ट लाइक होम. और बड़ा अच्छा मेरा पूरा जो एक ट्रांजिशन था एक डिफरेंट जगह से आके एक इस्लामाबाद में रहना, वो अच्छा था. मुझे याद है कि मैं ना एक टाइम पे जब मुझे MDi का पता नहीं, MDi किसी को नहीं पता था उस टाइम में. इट वाज स्मॉल कैंपस. अब तो इट्स ह्यूज. हैव यू सीन द पिक्चर्स? No, not the new campus. न्यू कैंपस इज ह्यूज मैन. वो हेड स्टार्ट कुरी कैंपस आपने देखा होगा, ये चकशेजाद वाले. So it's over there and it's beautiful. Me and my wife and my friend, we went there and like हम लोग तो we were in awe, like कि क्या जगह बन गई है, और हम लोग छोटे घर में रहते पढ़ते थे. But I think there is no comparison to that house and this new campus जो भी हमारी but that house was a bit that was a cozy place too. It was very I really loved it. It had that वो इस्लामाबाद की vibe नहीं होती F सेक्टर्स के अंदर जो मागला हिल्स बिल्कुल पास, हिल रोड इतना पढ़ने का मजा आता था, जस्ट स्कूल जाने का मतलब यूनिवर्सिटी जाने का मजा आता था. और ये चीज़ थी. मुझे याद है कि जब मैं पहली बार ना गुजर रहा था F6 वाली जो रोड है, स्कूल रोड है, मैं गुजर रहा था तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि यार ये एक यूनिवर्सिटी है तो उसको भी चेकआउट कर ले. उस टाइम ना बिल्कुल कन्फ्यूज्ड, इतना कन्फ्यूज मैं था ना कि पता नहीं था BBA करना है, क्या करना है, लिटरेचर में जाना है, कुछ एडवर्टाइजिंग के तो ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था ही नहीं. मतलब था कि क्रिएटिव बंदा वो लिख सकता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं था कि एडवर्टाइजिंग में एक फील्ड होती है. तो फिर मैं गाड़ी वो जा रही थी और भाई ने कहा यार ये भी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मेरे एक दो दोस्त यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं और ये इंटरनेशनल डिग्री है. सो मैंने कहा यार पाकिस्तान में इंटरनेशनल डिग्री. में मेरे दिमाग में वो चीज़ें आ गई कि भाई ये फेक डिग्री, वो चीज़ कहते नहीं HEC रिकग्नाइज्ड है. तो फिर मेरे ना थोड़ा सा हुआ कि यार अगर HEC रिकग्नाइज है तो आई शुड चेक इट आउट. मैंने चेक इट आउट एंड पता चला कि यार ये तो ऑस्ट्रेलियन डिग्री है. हम लोग मतलब दिस इज़ ऑथेंटिक, HEC रिकग्नाइज्ड, खप्पे शप्पे सारे फुल हैं, ठीक है. हमने आई थिंक जब पहली दफ़ा सुना था तो लगता था कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू कि यार एक इंटरनेशनल डिग्री मिल रही है, HEC से भी रिकग्नाइज्ड है. मुझे ऑन कैंपस डिग्री, नॉट इन एक्सटर्नल. उस टाइम ना एक्सटर्नल डिग्रीज नहीं शुरू हुई थी. नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रूट्स वगैरह की डिग्रीज थी. लेकिन उस टाइम ऑन कैंपस डिग्री वो डिफरेंट थी कि आप यहाँ से कर रहे हो, वहाँ से कर रहे हो, फ़र्क कोई नहीं है. और वहाँ पे आप जब दिल चाहे जा भी सकते हो. डिग्री पे कुछ नहीं लिखा होता ऐसा कि यार आप इस बंदे ने पाकिस्तान में बैठ के किया कि वो ताज गया था ना उधर ऑस्ट्रेलिया पे 2 साल करके. ताज भी गया था और एक और लड़का भी था, ही आल्सो वेंट देयर. नाउ देयर 2-3 और लोग भी. द गुड थिंग इज कि एवरीथिंग इज व्हाटएवर is being taught in that particular university in that area, exactly वही चीज़ें यहाँ पे भी चल रही होती है. So you can always have the option to just transfer your credits and move there. The same course leaders वहाँ के होते थे, यहाँ पे सिर्फ lecturers होते थे, लेकिन वो lecturers भी they were from the field. They weren't teachers. They were people who actually
were working in multinationals. They were working in different development sector organizations. Even the military organizations, they were working there. Now So, that you're mentioning this, कि मुझे इससे याद आ रहा है कि अभी जब मैं सोचता हूँ कि यार अब लोग कोविड के बाद ना वो ऑनलाइन एजुकेशन, जूम कॉल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स पे टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहते थे. We have done this long time ago, and it was very effective. It was very effective. At that time, people were like, "Oh, you don't have a campus life or this and that." But it was very effective in this part. That all the education that we got was the latest to the trends, and it was very practical. So when we global standards के ऊपर, they prepared us for like proper industry skills के साथ वो जो required होती हैं in terms of like. I remember my writing skills and my report writing skills were significantly improved because I was enrolled in an international report university. Writing, we were so shy to be in front of the class. Confidence कुछ नहीं था. And you know, after we graduated, मैं जब गया उधर, like my first job, and I had to give a presentation. It didn't feel anything different. You know, यहाँ पे ये होता है कि there's a huge divide. When you graduate, local university से you graduate, and when you go to work and you find out it's a completely different world. And you're not ready for it. It takes every young graduate years to come out of that shock. And I think so we were lucky enough to not go through that shock. We just went to work and we just started achieving. That's true. And that is why I think so we're still very young, and touch wood, I cannot find wood over there, but like touch wood, we have achieved. We are leading our departments, we are leading our organizations. Exactly. And this our experience at MDi actually played a significant role in whatever we have achieved so far in our career. 2-3 और चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी थी वहाँ पे वो ये थी कि एक तो बड़ा फोकस्ड अप्रोच था कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, बट अगर आप यहाँ पे बाकी लोकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं देन यू हैव टू स्टडी सो मेनी कोर्सेज जो आपसे रेलेवेंट ही नहीं होती. एंड डबल कोर्सेज मार्केटिंग 1 मार्केटिंग 2. हाँ एग्जैक्टली. और ऐसे कोर्सेज डाले होते हैं इंग्लिश, इस्लाम, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या के जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है. और वो पढ़ के आ चुके होते हो. एग्जैक्टली. यू ऑलरेडी डन दैट इन OA levels, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, सब चीज़ों में. यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी. इट वाज अ वेरी फोकस्ड डिग्री. इफ आई वाज स्टडीइंग अ बिजनेस डिग्री देन ऑल द कोर्सेज वर लाइक बिजनेस, और बड़ा अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया था और बहुत प्रेशर भी नहीं होता था स्टूडेंट. इट वाज वेरी इजीली मैनेजेबल, राइट. और MDi का ये भी था ना कि एक्चुअली वो ट्रेनिंग खुद भी ऑर्गेनाइजेशन थी. They were one of the pioneers of training corporate training के अंदर. Corporate training. And by the way, that's how I found out about MDi because my father told me कि there is this institute in Islamabad which is offering international degrees. मैंने कहा अच्छा, मुझे literally नहीं पता था बिल्कुल भी इसके बारे में. I think my father was attended some corporate training of MDi before, so that's why he got to know about it. और उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा चलो let's go to Islamabad, check it out कि क्या है. We came to the campus. The staff was really nice. I remember us. I think Asad Zaidi is still working there. He greeted us and he's the director. Actually, he's the director. Yeah. I think at that time there was a program manager. I've completely forgotten her name, but she was really nice as well. She was nice. From Quetta से थी ये मुझे exactly. She was from Quetta. Then I think so. Sir Arifin replaced her. हाँ, Sir Arifin was तो amazing. आरिफीन थे. फिर हमारे टाइम पे 3 लोग चेंज हुए थे. एक वो थे, फिर आरिफीन थे, फिर एंड पे जून थी, राइट. हाँ, मैम जून. Actually मैम जून. अब ये बात भी ना कि एक तो कोर्सेज पढ़ा देना, सारी यूनिवर्सिटीज़ एक तो इतनी भरी भी होती हैं. वहाँ पर ये सीन हमारा मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सीन होता है कि दे डोंट एक्चुअली फोकस ऑन द सिंगल इंडिविजुअल कि इसकी स्किल्स क्या है, ये कहाँ पे फिट होगा दुनिया में. तो मैम जून से याद आया मुझे कि मैम जून ने एक्चुअली देखा कि यार ये तो लड़का एडवर्टाइजिंग के लिए बना. तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़िव मैं ना इंटरफ्लो के एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर को जानती हूँ, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग एन इंटर्नशिप ओवर देयर इन द क्रिएटिव डिपार्टमेंट. I said okay because at that time ना मैं अपने father की organization में भी 4-5 दफ़ा कर चुका था internship. तो I've been doing internship since like I'm 7 years old, photocopying and all of that shit. But the thing is that this time ना it felt something different. It was like oh it's a calling वाला scene. So I didn't just think about it. I said okay, can you ask the guy? And she said yeah, sure. And उन्होंने बात की. And I got a call from Interflow and I went there and पूरी दुनिया मेरे सामने खुल गई. अब जो भी मैं हूँ ना वो it was that one experience that made me into like हाँ this is my field. Otherwise यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता. Even if they're doing their bachelors or masters, they don't know what their passion is, what their field of work is. So, I think that's where your faculty, your teachers play a very important role. और अच्छी बात ये थी कि जो लोग हमें पढ़ाते थे वो ना सिर्फ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे होते थे, बट उसमें से कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी ऐसे होते थे जो एक्चुअली इंडस्ट्री से उठ के आते थे और हमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. दिस वुमन फ्रॉम आई थिंक सो
some embassy or yeah. or some foreign donor organization. Her name was Moina. Moina, I remember her. Remember we used to usher for various international conferences. Exactly, हाँ. Yes. हाँ. और एक हमने I remember that one time जब हमने वो एक कार्निवल भी अरेंज किया था for some students, छोटे बच्चों के लिए किया था हमने. That was a very good experience. Also we used to go to that Dawn वाला जो education expo. हाँ, education expo. उधर भी set up करना and everything, meeting employers and everyone. So I think ये जो faculty जो और faculty के साथ साथ जो guest lectures होते थे जो कि actually industry में काम कर रहे हैं, इस तरह से जब आप एक environment create करते हो जहाँ पे इस तरह के लोग आते हैं who support students in their making their right career decisions as well. So I think these sort of things and these sort of arrangement in terms of faculty plays a very important role in your career as well. So I think ये चीज़ मिली मुझे for some extent at MDi, which helped me sort of like become like really successful in my career. देखो और cost point भी तो थी ना. Cost point भी थी. अब देखो हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, obviously my family could afford that, ठीक है, लेकिन the thing was my father was very reluctant in sending me abroad when I was 18. Like he was quite protective because I was the youngest sibling. He was like I'm not going to send him abroad yet. He was like masters के लिए बाहर चले जाना. Right now you should stay in Islamabad because you're too young. So he and he wanted me to get an international degree, so that was a conflict right there. So then when we realized that we could do this, we can get our like it's a win-win situation. Then we went for MDi, degree भी मिल रही है और and plus the cost point like now my father didn't have to pay like around 8 million or a crore for the whole degree. You know, बाहर जाते हो, living expenses, food expenses, and obviously हमारा उस टाइम तो रेट अच्छा था, डॉलर रेट अच्छा था, अब तो और भी खराब है. But the thing is that उस टाइम के हिसाब से it was quite expensive. And definitely I think it was very expensive. We did it in around 2 million. Something like that. I don't remember the exact amount, but ये मुझे पता है कि see I come from a humble background, right? It was already a very expensive degree for me. There was a time when I thought about like moving to some local university because of the cost factor, right? And the thing was कि you also got scholarship, ना? So मैं उसी पे आ रहा था कि the MDi team really supported me because they saw that there is a potential in me and I was performing really well in my academics as well. So they were kind enough to offer me certain scholarship to help me out. So इस तरह की चीज़ें. That wasn't a scholarship program, that was only built specially for you. Exactly. So इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे they go extra mile for students जो कि अच्छा perform कर रहे हैं और उनको support करने के लिए. So I think that was very generous. You'd be really happy to know because cost point was a very big factor. I think in your definitely. Life too. You'd be really happy to know. I met Asad Jadi recently, and he told me that they are launching a degree, BA Business Management, BA Honors Business Management with Asia Pacific University, which is in Malaysia. Acha. The same course style that was with the Australian University, but it's even less than $1 million. Acha. Interesting. So imagine a kid going to any of the local universities for a bachelor's degree and they're paying around 800,000 or 850,000 rupees. They're saying the same amount for the APU degree, which is a Malaysian degree. Exactly. I think And even like ranking wise, if you see, none of our local universities actually are anywhere there in the top 1,000 or something. Except like 2 or 3 or otherwise so ranking. But even ranking doesn't matter. It's the education that matters. The practical knowledge that matters. But the fun part is you're getting a Malaysian degree which is reputable, much more reputable than any of the degrees in the local scene. And at the same price. So exactly. I was quite shocked. I was like, yeah, they're getting better and better at what they're doing. And no, मतलब ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में. So I think so. Okay, यार, we should. We're in the industry right now. I think so. We should propel this message. Exactly, and I think now with the new campus, they're probably well equipped. Offering a lot of like. Offering you like a proper university experience in a bigger space with and I'm sure with probably like a better faculty. And हम लोग scholarship की बात कर रहे थे और scholarship के अंदर ना मुझे असद साहब बता रहे थे कि यार देखो जहाँ तक हमें students अच्छे चाहिए होते हैं. We need students जिनके पास जिन पर अगर invest भी करें तो वो students कहीं निकल के हमारा नाम भी रोशन करें और हम उनकी जिसका
वो सही कि उमैर को या तुम्हें देखकर या लेट्स से मोमिन को देखकर और काफ़ी ज़्यादा जो और स्टूडेंट्स थे, आतिफ़ा हो गई, अलीज़े हो गई, इन सब की जो सक्सेस को देखकर जब वो इतना प्राउड होते थे, ही वाज लाइक यार आई एम विलिंग टू, मेरी जो अपनी MDi की जो पेमेंट्स होती हैं उसमें से आई एम विलिंग टू give 25% off, 50% off, 75% off on merit base to a kid जिसके पास ये चीज़ हो. And you know एक yeah, it's a good thing. It's हाँ, a very and good he was initiative. यही एक जो हमारी एक बनी हुई है ना repertoire बनी हुई है in the industry of all the graduates. I haven't seen that in all of the universities around. I think so कि सारे जो हैं I think so 99% of them are employed. Yeah, I think most of them are all over the world. I know just in people who are in Pakistan, the US. I know people who are in Australia, yeah. in Europe, UK, Middle East. Yeah. हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन the thing is in 10 years you're leading in a department. You're leading a very important department in the organization. I am leading global operations for creatives for a sports brand. So I think so. Yeah. MDi has a lot to do with this. Yeah, definitely. You know? I think there is definitely a lot of contribution and support from what we have, the way we have been groomed and the education that we received at MDi definitely played an important role. And I think MDi को चाहिए कि थोड़ा सा like go to like these different schools or especially ना सिर्फ OA levels वाले students but different cities के अंदर भी जाके info sessions कराएं. HND याद नहीं HND exactly हाँ. Edwards So College से awareness की ज़रूरत है because a lot of people I still think that a lot of people don't know about MDi, right? So it's very crucial for MDi to sort of like maybe engage people like us, the alumni team, to go with them to different schools, colleges वगैरह जहाँ पे info sessions कराए जा सकते हैं. That's a nice idea. So awareness के लिए. So I think that's one way to go. this idea दूसरा से. लेकिन ये है कि HND के कुछ स्टूडेंट्स होते थे हमारे पेशावर HND एडवर्ड्स कॉलेज में होते थे. आई वेंट टू एडवर्ड्स कॉलेज व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट MDi. हम लोगों ने वहाँ जाके पिच की थी, बताया था उनको अबाउट कि HND वालों को आई थिंक सो काफ़ी सेमेस्टर्स ऑफ मिल जाते हैं. हाँ वो क्रेडिट्स एग्जेम्पशंस हो जाती हैं. So yeah, that was और apart from that यार हमने साल भी बचाया है. So and we had 9 semesters in 3 years. And the local universities have 8 semesters in 4 years. So it was exactly the same, but we saved a year. That was a year going into our professional life and our experience. So I think the best thing is that your degree is recognized all over the world, pretty much in all countries. So that's the best thing. मुझे अभी अगर कहीं से verify करानी हो अपनी degree, let's suppose I'm planning to go to Canada or Europe. It's like so easy to get my degree verified. Very easily because it's recognized over there. सारी जो recognizing वो कौन सी थी institution था जहाँ से recognize जहाँ कनाडा के लिए जब आप जाते तो वेस्ट के थ्रू आप recognized. And my degree is equivalent to the Canadian bachelor's degree. And I remember I was looking into my master's degree, which is from Beacon House National University. And the Canadian consultant, he told me that I would have to go an extra mile and get it done from University of Toronto or something. मेरी US की डिग्री जो है वो हो जाएगी आराम से वेस्ट के थ्रू, बट मेरी लोकल डिग्री बहुत मुश्किल से होगी. ये बस है, ये इशू था. उस डिबेट में नहीं पढ़ते कि कंपैरिजन करने लग जाए, बट it has its pros and cons. और I think so कंपैरिजन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी अवेयरनेस नहीं है ना हमारे जो यंग बच्चों में है ना. उनको लगता है कि इंटरनेशनल डिग्री शायद मे बी इट्स टू गुड टू बी ट्रू, मे बी इट डजंट हैव द एक्सपोजर दैट दे नीड, द सोशल एक्सपोजर. बट आई थिंक सो सोशल एक्सपोजर you can get from other places too, but this practical knowledge that you need in order to go into the industry and not get shocked on वही कल्चर हो. अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या मार्केटिंग पढ़ रहे हो, आपका वही कल्चर आपको बैचलर से मिले या और मास्टर से मिले, ताकि आप जब जाओ अपनी यूनिवर्सिटी अपने काम पर तो इट्स नॉट कि यार something new, oh shit, you're starting from scratch or something. What am I doing? I think ये बड़ा एक मसला है पाकिस्तान के अंदर, where there's like a huge gap between academics and industry, right? So that's where degrees like these come in and institutions like these come in, which is actually working on like preparing the students for the industry. और बात ये है कि मैं कंपैरिजन पे एक और बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कंपैरिजन है क्योंकि
जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, जब तक बाकी यूनिवर्सिटीज वोंट अप देयर गेम. इट्स नॉट अबाउट कि MDi की हम बहुत वाह करें कि यार MDi बहुत फिट है और बाकी नीचे हैं. इट्स मोर अबाउट कि बाकी लोग आप अपनी गेम करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग हायरिंग कर रहे होते हैं, हम रिक्रूटिंग कर रहे होते हैं. कितनी मुश्किल होती है यार टू गेट द राइट पर्सन. ठीक है, हमारे लिए भी आसानी होगी यार कि कल को अगर सारी यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ सच यूनिवर्सिटीज सच एज MDi, we'll get good resources, and in the end the good resources will do good work. And अगर आप कहते हैं वो क्या कहते हैं इफेक्ट, रिपल इफेक्ट देखें तो रिपल इफेक्ट में it will be better for the country. So I think Pakistan में कमी नहीं है टैलेंट की. It's just that if you provide them the right platform and exposure,